Hello everyone, welcome back. So today with these 5 questions we will be completing our first chapter. Okay, the chapter pair of linear equations in two variables will be completed today. Now students, I have taken these 5 questions. Okay, in the last lecture we were solving the word problems based on time and work, speed, time and distances. We have solved in our last lecture. Okay, now today see, this problem I have taken from the same concept, time and work. This problem I have taken from your profit and loss. Okay, in 8th class you know about the profit and loss calculations. Now the third question I have taken from the new concept, the concept of mixture and alligation. Okay, थोड़ा सा भी अगर पेपर ट्रिकी बनता है तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और बिकॉज मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड पेपर का भी एक रूल स्टार्ट हो गया है, तो स्टैंडर्ड पेपर में हम लोग ऐसे क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके, नाउ यूजुअली अभी तक ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट कभी भी पूछ सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4th, this is a simple question based on your general aptitude counting. Okay, and 5th question we have taken from the two-digit number concept. So today we will have these 5 questions, and with these 5 questions the chapter is gonna be completed. Okay, now let us start with the very first question. See carefully. It can take 12 hours to fill a swimming pool using 2 pipes. Okay, there is a swimming pool and which are filling by the 2 pipes. Okay, we are filling the swimming pool by 2 pipes. Now if the pipe of larger diameter is used for 4 hours and a pipe of smaller diameter for 9 hours, only half the pool can be filled. How long would it take for each pipe to fill the tank separately? Students, we can relate this problem with the time and work. I just told about time and work concept in the last lecture only. Okay, I told you that if a person is taking x days to complete a particular work. Okay, if a person is taking x days to complete a work, so what will be the fraction of work completed in a day? The fraction of work completed in a day is 1 upon x, or known as work efficiency. So similarly, who is doing work? Here pipe is doing work. Okay, and what is the work? To fill the swimming pool. See, in the first line it is given that it can take 12 hours to fill a swimming pool using 2 pipes. अगर दोनों pipes को हम यूज़ करते हैं तो 12 hours में swimming pool fill हो जाता है. But if the pipe of larger diameter, because there are 2 pipes, one is of larger diameter and another is of smaller diameter. Now if the pipe of larger diameter is used for 4 hours, जो बड़े diameter का pipe है उसको 4 घंटे के लिए यूज़ करा, and smaller diameter के वाले को 9 घंटे के लिए यूज़ करा, तो उस केस में केवल हाफ जो है वो पुल फिल्ड होता है. अगर हम पूरे पूल की कैपेसिटी को 1 मान ले, जैसा कि हम मानते हैं टाइम एंड वर्क में. ओके, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द टैंक सेपरेटली? तो इंडिविजुअली अगर अपन पाइप को ओपन करते तो कितना टाइम लगता इस स्विमिंग पूल को फिल करने में. सी, द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क वी विल यूज हेयर. सॉल्यूशन नंबर 1. सी स्टूडेंट्स केयरफुली. सपोज पाइप ऑफ लार्जर dia means diameter, takes x hours, and pipe of smaller dia takes y hours to fill the complete tank separately. I assumed that if they fill the tank separately, the pipe of larger diameter takes x hours and a pipe of smaller dia takes y hours. Now if I ask you, in 1 hour what is the part of swimming pool filled by pipe of larger diameter? So it will be 1 upon x, because in x hours it is filling the complete pool now. So in 1 hour it is filling 1 upon x part of this, because I have assumed the whole swimming pool capacity as 1. Okay, so what is the equation now? See, according to question, this 1 upon x is this 1 upon x represents the part of swimming pool filled by pipe of larger diameter in 1 hour. Now similarly, if I talk about part of
swimming pool filled by the pipe of smaller diameter in a R, it is 1 upon y. And if I add these two, what does it mean? It means the total part of pool filled by the टू पाइप्स वर्किंग टुगेदर, अगर दोनों मिलके एक घंटे में कितना पार्ट स्विमिंग पूल का फिल करते हैं, यही होगा ये 1 upon x plus 1 upon y. नाउ इट शुड बी इक्वल टू दी टोटल पार्ट ऑफ स्विमिंग पूल फिल्ड इन आर. नाउ इट इज गिवन टू अस दैट इट कैन टेक 12 hours to fill the swimming pool. That means in 12 hours the complete swimming pool is filled. That means in 1 hour the 1/12 part of the swimming pool is filled. So hence we got the first equation. Again I am explaining what I did here. See, this 1 upon x plus 1 upon y represents the total part of swimming pool filled by the two pipes together in a R. 1 upon x part by pipe of larger dia and 1 upon y part of swimming pool by pipe of smaller dia. Okay, ये 1 upon x पार्ट लार्जर डायमीटर वाले पाइप ने फिल किया और 1 upon y पार्ट जो है वो स्मॉलर डायमीटर वाले ने फिल करा. दोनों ने मिलकर 1 upon x plus 1 upon y किया और ये इक्वल होना चाहिए द टोटल पार्ट फिल्ड बाय द टू पाइप्स इन अ R, दैट इज 1 upon 12, बिकॉज इट इज गिवन दैट इन 12 hours दे आर फिलिंग द होल स्विमिंग पूल. So it is your equation number 1. Now let us come to the condition number 2. Condition number 2 is when the pipe of larger diameter is used for 4 hours. Okay, अगर larger diameter वाले पाइप को हमने 4 hours के लिए यूज़ करा तो देखो 1 upon x पार्ट फिल कर रहा था 1 hour में, तो 4 hour में कितना फिल करेगा? 4 times 1 upon x और 4 upon x, क्लियर. तो in 4 hours the part of swimming pool filled by the pipe of larger diameter is gonna be 4 upon x, and similarly pipe of smaller dia in 9 hours will fill the 9 upon y part, and it is given that only half the pool is filled, so it will be equal to half. Why half? Because it is given to us that half of the swimming pool is filled. Now we have two equations. Okay, now you know how to solve these equations. Okay, these are actually equations reducible to linear. Okay, and we had enough practice now to solve these kinds of equations, so it's your work to solve further. Okay, solve on your own. इसके आगे आप लोग अपने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें, x और y की वैल्यू बताएं और वही इस क्वेश्चन के आंसर होंगे. ओके, ऐसी कुछ क्वेश्चन हम पहले भी बहुत सॉल्व कर चुके हैं. Without wasting time, let us come on the second question. See, second question I have taken from profit and loss. See, on selling a TV at 5% gain and a fridge at 10% gain, a shopkeeper gains rupees 2000. Okay, एक शॉपकीपर है, वो टीवी को 5% गेन पर सेल करता है और फ्रिज को 10% गेन पर. गेन किस पे कैलकुलेट होता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे. ओके, एंड द टोटल gains on the transaction is rupees 2000. Okay, in the condition 1 the total gain is rupees 2000. Now if he sells TV at 10% gain, now condition 2 is given, अगर वो सेल करता टीवी को 10% गेन पे एंड फ्रिज एट 5% लॉस, एंड फ्रिज को वो 5% लॉस पर सेल करता, देन ऑल्सो ही गेन्स रुपीज़ 1500. तो उसका जो नेट ट्रांजेक्शन पर गेन होता वो रुपीज़ 1500 होता. ओके, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी एंड फ्रिज. वेरी सिंपल, हमको निकालनी है कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्रिज एंड टीवी. सो सपोज कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी बी रुपीज़ एक्स एंड दैट ऑफ फ्रिज बी रुपीज़ वाई respectively. I just assumed that the cost price of TV be rupees X and fridge be rupees Y. Now students, see, on selling a TV at 5% gain. Now gain is always calculated on the cost price. Now if I calculate the gain on TV, so it will be 5% of X. So 5% of X is your total gain on TV in rupees. Okay, now and fridge at 10% gain. The gain on selling the fridge will be 10% of what? Why? Because I have taken cost price of fridge
as y. Now this is the gain on TV, this is the gain on fridge. It should be equal to total gain in the transaction, and you are given the total net gain on the transaction is rupees 2000. So yes, we can we found the equation. Now it will become 5x upon 100. I just solved the percentage. Okay, you know, whenever we remove the percentage sign, it will be divided by 100. Now similarly, it will be your 10y upon 100, 10 times y upon 100, and it is equal to 2000. No problem. Now if I take LCM as 100 and multiply in the right hand side, it will become 5x plus 10y is equal to 2000 into 10. That means 2 lakh. Clear? Now it's your equation number 1. Now in the next condition, it says that if he sells TV at 10% gain, अगर TV पर, ये तो केस 1 था है ना, it was our case 1, and by case 2 we will get the second equation. Now it is saying that if he sells the TV at 10% of gain, so gain in rupees will be 10% of x, and fridge at 5% loss. Now fridge पे loss हो रहा है. Now amount he is losing actually. So in the net gain, when I calculate the net gain or net amount in the whole transaction, it should be subtracted because he is losing money now. So we will take here negative sign. Okay, so it is the total gain on TV. Now amount he will lose will be negative. So see, I am taking here negative sign, and 5% loss is there, so it will become 5% of y. And see, this is the profit obtained on selling the TV, and this is the loss incurred at fridge. Loss incurred on fridge. Okay, now the total amount after transaction is rupees 1500 gain. So because he is still gaining rupees 1500, so it should be equal to rupees 1500 plus. ओके, अगर ये टोटल नेट ट्रांजेक्शन में अमाउंट लूज करता तो मैं यहाँ नेगेटिव साइन लेता. जहाँ भी लॉस आएगा नेगेटिव साइन होगा. क्यों? क्योंकि उसके पास से अब पैसा जा रहा है. ये इतना पैसा उसके पास आया, इतना पैसा गया. ठीक है, तो ये जो नेट अमाउंट है वो इनके एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा, और एल्जेब्रिक सम का मतलब है यहाँ पर नेगेटिव लेना पड़ेगा हमको. क्लियर? नाउ इफ आई सॉल्व दिस, इट विल बिकम 10x अपॉन 100 माइनस 5y अपॉन 100, एंड इट इज इक्वल टू 1500. ओके, नाउ इफ आई टेक 100 एज एन एलसीएम, so it will become 10x minus 5y is equals to 1500 times 100. Okay, if I divide the whole equation by 5, it will become 2x minus y is equals to, it is 300 into 100. Okay, so yes, it will become 30,000. That's your equation number 2. No problem at all. Okay, so in this way we can solve these two equations and get the required answer. Now to solve these equations we have to make the coefficients equal. Now it's your work, I guess. Okay, because this is very simple equations to solve. So yes, I leave this solution part on your side. See, so we have completed the two questions. Let us come on the third one. Oh, third one is very good question. It is the question based on your mixture and alligation concept. Okay, third question. See carefully. A vessel contains a mixture of 24 liter milk and 6 liter water. There is a vessel which contains 24 liter milk and 6 liter water. Okay, and a second vessel contain a mixture of 15 liter milk and 10 liter water. There are two vessels. Okay, in first vessel we have 24 liter of milk and 6 liter of water, and in the second vessel we have 15 liters of milk and 10 liters of water. Okay, now how much mixture of milk and water should be taken away from each vessel and kept in the third vessel, so that the third vessel contain a mixture of 25 liter milk and 10 liter of water. Okay, see, here we will use the concept of ratio and proportion. Okay, see, very good question. ये आपके लिए नया कॉन्सेप्ट भी है, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन अभी आपने नहीं देखा है, और यूजुअली इस तरह का क्वेश्चन नहीं भी आता है.
ठीक है, बट कभी भी आ सकता है, और फॉर NTSC पॉइंट ऑफ व्यू तो ऐसे क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं आना, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स देखो, 24 लीटर मिल्क एंड 6 लीटर वाटर, ठीक है, इनका मिक्सचर है वेसल नंबर 1 में, ओके, और वेसल नंबर 2 में मिक्सचर है 15 लीटर मिल्क का 10 लीटर वाटर के साथ। अब ये बोल रहा है वेसल से, फर्स्ट वेसल से भी हमने कुछ मिक्सचर लिया और सेकंड वेसल से भी हमने क्या किया, कुछ मिक्सचर लिया, और दोनों मिक्सचर को लेके हमने क्या करा, एक थर्ड वेसल में डाल दिया, ओके। वी हैव टेकन द मिक्सचर फ्रॉम द 2 वेसल्स एंड जस्ट पुट दिस मिक्सचर इन द थर्ड वेसल। नाउ व्हाट हैपेंड, we want the mixture in the third vessel, 25 लीटर मिल्क एंड 10 लीटर ऑफ वाटर। मतलब हम चाहते हैं कि जो थर्ड वेसल में मिक्सचर हो उसके अंदर 25 लीटर मिल्क हो और 10 लीटर ऑफ वाटर हो। तो अब आप बताओ कितनी कितनी क्वांटिटी हमको लेनी चाहिए, कहाँ से, वेसल 1 से और वेसल 2 से। नाउ सी, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं थोड़ा सा रेशियो प्रोपोर्शन समझा दूँ आपको, तो बेटर होगा आई गेस, एक ही बार में समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। सी, फॉर वेसल 1, ये रफ वर्क है, आप इसको रफ वर्क समझे, रफ वर्क। सी, फॉर वेसल 1, इफ आई take 24 liter milk and 6 liter water, if I take the ratio of milk and water, so ratio of milk and water is gonna be 24:6, because out of this 30 liter mixture 24 liters is milk and 6 liter is water, okay. So if I take x liters of this mixture, what will be the quantity of pure milk? See, in the 30 liter mixture, what is the quantity of pure milk? 24 liter now. So if I take x liters out of this mixture, what will be the quantity of milk, pure milk in this? Okay. See, it can be solved by the method of your ratio. See, if I solve it, it will become 4:1. That means suppose 5 parts are total there. Total 5 parts are there, in which 4 parts are of milk and 1 part of इज वाटर। मतलब अगर टोटल हमारे पास 5 लीटर मिक्सचर होता तो उसमें से 4 लीटर तो दूध होता और 1 लीटर पानी होता। तो अगर इसमें से x लीटर टोटल हमारे पास मिक्सचर होता, ओके, तो उसके अंदर कितना मिल्क होता। तो सी, क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकालने के लिए क्वांटिटी ऑफ मिल्क मीन्स रेशो ऑफ मिल्क अपॉन टोटल रेशो, दैट इज 4 + 1 5 टाइम्स द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, दैट इज x. So it will be 4x upon 5. So quantity of milk, this represents quantity of milk in x liters of mixture. See, it is very very simple. 4 upon 5 times, because 5 में से 4 पार्ट किसके हैं? अगर 5 पार्ट मिक्सचर है तो उसमें से 4 पार्ट किसका है? उसमें मिल्क का है ना। तो अगर टोटल मिक्सचर x पार्ट है, टोटल मिक्सचर हमने x लिया, तो 4x upon 5 जो है वो मिल्क की क्वांटिटी होने वाली है। क्लियर? और ये काम आपने 7th 8th क्लासेस में करा है, रेशो प्रोपोर्शन, रेशो के क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्लियर? और स्टूडेंट्स, ये तो हो गया मिल्क का वाटर के साथ रेशो, एंड ये हो गई हमारी क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन वेसल 1, प्योर क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ओके। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ आपको समझने के लिए, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन वेसल 1, सी, इन x लीटर्स ऑफ मिक्सचर है ना, क्वांटिटी ऑफ मिल्क टेकन फ्रॉम वेसल 1 इन x लीटर्स ऑफ मिक्सचर। ये रफ करके यहाँ तक आपको समझ में आ गया 4x upon 5 कैसे आया। नाउ सिमिलरली अगर वेसल 1 में मैं वाटर की क्वांटिटी बताऊँ, ओके, इन x लीटर्स ऑफ मिक्सचर द क्वांटिटी ऑफ वाटर, व्हाट इज गोना बी 1 upon 5 टाइम्स y, sorry, 1 upon 5 times x, because I am taking x liters from vessel number 1, okay, so it is gonna be equal to x upon 5 liter. So out of x liters, 4x upon 5 liters are milk and x upon 5 liters are water. Clear? Similarly अगर मैं बात करूँ वेसल 2 की, तो वेसल 2 में से मैंने क्या लिया है? वेसल 2 में से मैंने y लीटर्स मिक्सचर लिया है, ठीक है ना। तो इन y लीटर्स मिक्सचर के अंदर अगर मैं क्वांटिटी ऑफ मिल्क बताऊँ, ओके, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो देखना वेसल 2 के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। 15 लीटर मिल्क है और 10 लीटर वाटर है, तो रेशो कितना है? 15:10, ओके, दैट मीन्स 3:2, 3:2 रेशो है। तो अगर मैं क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन x लीटर्स ऑफ मिक्सचर निकालूँ, तो कितनी होने वाली है? 3 upon 5 टाइम्स x, बिकॉज आउट ऑफ 5 पार्ट्स देर आर 3 पार्ट्स ऑफ मिल्क, ओके। सिमिलरली क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी होने वाली है? क्वांटिटी ऑफ वाटर, this quantity of water is gonna be your 2 upon 5 times, sorry, y, we have taken y liters
from this na. Okay, so it is y. So yes, we can say out of y liters taken from vessel 2, 3y by 5 is the quantity of pure milk and 2y by 5 is the quantity of pure water. Now by using this we can make the two equations very simple, very easily. See, suppose x liter of milk and suppose x liter of mixture, suppose x liter of mixture and y liter of mixtures or y liters of mixture are taken away from vessel 1 and vessel 2 respectively, from vessel 1 and vessel 2 respectively. I just assumed that x liter of mixture and y liter of mixture are taken away from vessel 1 and vessel 2 respectively. vessel 1 से हमने x liter mixture उठाया और vessel 2 से y liter mixture उठाया. Now see carefully, the quantity of pure milk in x liters of mixture taken from vessel 1 is gonna be 4x upon 5. I just told you here, okay, in the rough part. This is rough work. Clear? Now 4x upon 5 is the quantity of pure milk in x liters of mixture taken from vessel 1. Similarly, the quantity of milk in the x liters of mixture, sorry, in the y liters of mixture taken from vessel 2, क्योंकि हमने vessel 2 से y liters of mixture लिया था. तो what is the quantity of milk here? It is 3y by 5. I guess no problem. See, this is the quantity of milk taken away from the vessel 1 and this is the quantity of pure milk taken away from vessel 2 in y liters of mixture. Okay, so this is gonna be 25 liter. Yes, 25 liter, because in third vessel we want the quantity of milk as 25 liter. Okay, so it is our equation number 1. What I equate, I just equated the total quantity of milk, pure milk. Okay, because in the third vessel I want 25 liter of milk. That means I have taken 4x upon 5 quantity of milk from the vessel 1 and 3y upon 5 quantity liters of milk from vessel 2, and the total quantity of milk is equal to total quantity of milk. Clear? Now the second equation is gonna be our what is the quantity of water taken away from the vessel 1? It is x upon 5. X upon 5 liter is the quantity of water taken away from vessel 1. Okay, pure water. Now similarly, quantity of water taken away from vessel 2 is 2y by 5. Okay, and the total quantity of water is gonna be 10 liter in the third vessel, so it is equal to 10. Hence we got the second equations. Now solving these two equations and getting the answer is your work. Solve these two equations and get the quantities of mixture taken from vessel 1 and vessel 2 respectively. It's your work completely. But मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दिया है, ठीक है. इस कॉन्सेप्ट में आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ये रफ वर्क है, आपको समझाने के लिए यूज़ किया गया है. आप इसको समझने के लिए यूज़ करें, उसके बाद डायरेक्ट इक्वेशंस बनाएं. ओके, क्योंकि हमने जब x लीटर्स मिक्सचर वेसल 1 से लिया है तो उसमें 4x अपॉन 5 प्योर मिल्क आया है. ये समझना, मतलब ये कैसे आया, उसके लिए थोड़ा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट था. चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की. सोल्यूशन नंबर 4. सी, a man when asked how many ducks and cows he has, एक आदमी से पूछा गया भाई तेरे पास कितनी गायें और डक्स हैं. ओके, told that his animals have 170 eyes and 270 legs. अच्छा भाई, आदमी बोलता है कि मेरे पास जो एनिमल्स हैं उनमें टोटल 170 आइज है एंड 270 लेग्स है. ओके, वो डायरेक्ट नहीं बता रहा है वो कि कितने नंबर ऑफ एनिमल्स है, वो बता रहा है कि मेरे पास जितने एनिमल्स हैं उनमें 170 तो आइज है ना, और 270 इनकी लेग्स है. डिटरमाइन हाउ मेनी डक्स एंड काउज हैज ही. सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो. सपोज ही हैज़ x नंबर ऑफ काउस. मान लिया उसके पास जो नंबर ऑफ काउस हैं, गायें हैं, वो x है, एंड y नंबर ऑफ डक्स.
y नंबर ऑफ डक्स. एज्यूम कर लिया कि उसके पास x जो है वो नंबर ऑफ काउज है एंड y है नंबर ऑफ डक्स. नाउ because it is given that the total number of eyes are 170. See, one cow has 2 eyes also sorry, each cow has 2 eye. Okay, also the each duck has 2 eyes. Okay, so the total eyes in x cows will be 2x, and similarly total eyes in y number of ducks will be 2y, and the total eyes should be 170. So it's your simple C equation. Okay, now it can be written as x plus y is equals to 2 8 is 16 and 2 5 is 10. Equation number 1. No problem at all. I just equated the number of eyes because it was given the total eyes is 170. So 2x is the eyes of cows, and 2y is 2y are eyes of ducks. So and 270 lakhs. Okay, so each cow has 4 lakh, so there will be 4x lakhs. Okay, in cows. Okay, and 2y because a duck has 2 lakhs now, so the total number of lakhs in y ducks will be 2y, and the total number of lakhs should be 270. So 4x plus 2y is equals to 270 will be your second equation. You can also multiply this equation by 2 both the sides. You will get 2x plus y is equals to 2 1 is 2, 2 3 is 6, 2 5 is 10. Equation number 2. Solving 1 and 2, you can calculate the number of cows and the number of ducks. Your part to solve these two equations. Okay. Last solution number 5. The last question. Okay, see, if a certain number is divided by sum of its 2 digit. Okay, there a number 2 digit number. Okay, if the number is divided by sum of its 2 digit, a number is dividing by the sum of digits. Okay, the quotient is 6 and the remainder is 3. See, this question is based on your division algorithm. You know the division algorithm in 9th class you have studied. Okay, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Okay, we will use that here. Now when I divided a 2 digit number by its sum of digits, the quotient I got is 6 and the remainder is 3. Okay, if the digits are interchanged, the resulting number is divided by its sum of digits again, then the quotient is 4 and remainder is 9. Very simple. We are given the two conditions and we have to form the two equations. Suppose original number b 10x plus y. हमने एज्यूम कर लिया जो हमारा नंबर है ओरिजिनल वो 10x प्लस y है. तो इसकी डिजिट्स क्या क्या हो जाएंगी? इसकी 1st डिजिट तो हो जाएगी y और इसकी 10th डिजिट हो जाएगी x. ये हमने पहले पढ़ रखा है. ओके, हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं पहले. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट्स मीन्स x प्लस y, so it will become your dividend and x plus y will become your divisor. Okay, then quotient and remainder you are given. So according to question, let me write the division algorithm here. Dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. We know about this. Now dividend is our number 10x plus y. Divisor is your sum of digits, that means x plus y, and in the first case we are getting the quotient as 6 and remainder as 3. So your quotient is 6 and remainder is 3. So after solving we get the first equation. So it is your 10x plus y is equal to 6x plus 6y plus 3. So it is 4x minus 5y is equal to 3, and hence we got equation number 1. Okay, I just transpose the 6x and 6y in the left hand side. Now similarly it was our case 1. If I take the case number 2, what are the quotient and remainder? See, if the digits are interchanged, okay, if the digits are interchanged, the new number will be 10y plus x, and this time again this number is divided by the sum of digits, that is x plus y,
If the digits are interchanged and the number is divided by x plus y again, divisor is same again, so the quotient is 4 and remainder is 9. Okay, so the quotient I am getting is 4 and the remainder I am getting is 9. Now solving this, what we will get, see here, it is your 10y plus x is equal to 4 times x plus 4 times y plus 9. ओके, अगर इसको ट्रांसपोज कर लें हम तो 10y माइनस 4y ये बन जाएगा 6y. एक काम करते हैं, उसी तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं पूरी को. 4x माइनस एक्स बन जाएगा 3x. ओके, एंड 4y माइनस 10y, 4y माइनस 10y बनेगा आपका माइनस का 6y एंड प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 9. ऑल्सो दिस इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड विद द 3. ओके, सो इट इज नाउ x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 3. से इक्वेशन नंबर 2. नाउ वी हैव टू इक्वेशंस एंड वी नो हाउ टू सॉल्व दिस टू. ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन है तो इसको मैं कंप्लीट सॉल्व करता हूँ. ओके, नाउ सॉल्विंग equation 1 and 2. Solving equation number 1 and equation number 2. See, in order to make the coefficients of x equal, I have to multiply equation number 2 with 4. Okay, so first of all I am writing the first equation, that is 4x minus 5y is equals to 3, and the second equation I am multiplying with the 4. So it is 4x minus 8y is equals to minus 12. I just multiplied by 4 both sides. Okay, it is minus, it is plus, and it is plus again. 8y minus 5y will become plus 3y, and 12 minus 3 will become 9. Yes, so the value of y is gonna be 12 plus 3, 15. So the value of y is gonna be plus 5. It is plus 12 and plus 3, so 12 plus 3 is 15. So the value of y is 5. Now if I put this value of y in equation number 2, putting in equation number 2, it is x minus 2 into 5 is equal to minus 3, or x minus 10 is equals to minus 3, or x is equals to 10 minus 3 or 7. So the value of x is 7. So the required number is 10 into 7 plus 5 or 75. Can I write directly? Yes, the required number is 75. Also you can check, if I divide 75 by sum of digits. Sum of digits means 7 plus 5 12. So if you divide 75 by 12, you will get quotient and remainder. Quotient will be your 6, 12 6, and the remainder will be your 3. So in this way, now with this note our chapter gets finished. Congratulations, you have completed your first chapter of 10th class, pair of linear equations in two variables. Okay, now students, ये मैंने कराया है अभी आपको. The number of questions you practice, so you will get proficient in solving. Okay, so I suggest you to solve number of questions. Okay, as much as you practice, you will be in the position to solve any question on word problems. Okay, और देखकर आपको अगर ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन तो मुझसे हो जाएगा, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. ओके, जब तक कि क्वेश्चन आपके पेन से सॉल्व नहीं होता तब तक आपको मतलब उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि एग्ज़ाम में ही आपसे सॉल्व होगा. ठीक है, पहले आपने सॉल्व कर रखा है तो ठीक है, मतलब एक बार तो आप हर टाइप का क्वेश्चन आपने सॉल्व किया ही होना चाहिए. तो यू हैव नोट्स, यू हैव प्रैक्टिस शीट्स. ओके, ऑल्सो कई स्टूडेंट्स की तो मेरे पास प्रैक्टिस शीट सॉल्व होके भी आ गई है, प्रैक्टिस शीट 3rd तक हो गई है. प्रैक्टिस शीट 3rd के अंदर मैंने आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं. जैसे पहले ही क्वेश्चन के अंदर आपने देखा होगा क्वाड्रेटिक बन रही है, बट वी हैव अ वे टू सॉल्व that equation by linear equations, by using the linear equations in two variables concept. Okay, so without making quadratic equations also we can solve that question. Okay, now I will
complete this class today. Okay, finish the class. In the next class we will be having a new chapter. Okay, and I think the chapter should be your trigonometry, as I discussed with some students. Some students demands that the trigonometry should be the next chapter. So yes, we will start with the trigonometry in the next class. Till then, take care. Bye bye. Enjoy. Keep practicing and enjoy the maths.